नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, इट इज अ सेकंड चैप्टर ऑफ 12th क्लास बायोलॉजी, राइट। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, जिनकी डिटेल्स हम लोग लास्ट क्लास में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, सो ऑल द एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। ओके, जिस भी प्लांट में आपको फ्लावर्स खिलते हुए दिखते हैं या फ्लावर्स होते हैं, वही एंजियोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और ये पहचान है उन प्लांट्स की कि ऐसे प्लांट्स के अंदर केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उन फ्लावर्स की हेल्प से ही होता है। तो हम कह सकते हैं इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस flowers are the sites of sexual reproduction in flowering plants. Okay, देखा जाए तो flowers जो होते हैं these are modified reproductive shoots. क्या है flowers? Flowers are modified reproductive shoots. Clear? When we cut a flower vertically, so in its vertical section a flower looks like this. Okay, अब एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट पैटर्न क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है उनके अरेंजमेंट का, वो इस प्रकार से है। क्लियर? हर एक फ्लावर में जनरली एक नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं, और पेडिसिल का जो टर्मिनल पार्ट होता है दैट इज समवट फ्लैटेंड, और उसी को हम लोग थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। ऑन दैट थैलेमस ऑल अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर प्लेस्ड, राइट। जो दूसरे पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? नंबर 1, फ्लावर के सबसे बाहर, जी पहली बात तो जो भी फ्लावर्स के पार्ट्स हैं दीज आर मॉडिफाइड लीव्स ऑफ फ्लावर। क्लियर? हम कह सकते हैं दीज आर दी फ्लोरल एपेंडेजेस। क्लियर? तो फ्लावर का सबसे जो बाहर का रिंग है, सबसे जो बाहर स्ट्रक्चर्स है, वो स्मॉल एंड ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। क्लियर? एंड दैट वर्म, दैट रिंग, that group of sepals is known as calyx. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कैलिक्स। क्लियर? और जो कैलिक्स होते हैं, बिकॉज दीज आर ग्रीन, therefore they perform two types of functions. एक तो they perform photosynthesis being green due to the presence of chlorophyll, and दूसरा when flower is in a bud stage, these sepals provide protection to inner parts of flower. Okay, in bud stage. So I mean group of sepals is called calyx, and individual members of calyx are sepals. Sepals being green, they perform photosynthesis and they also provide protection to inner parts of flower when a flower is in bud stage. Okay, दूसरा हम बात करते हैं, the second whorl of flower is formed of large and brightly colored floral appendages, जिनको कि हम petals कहते हैं। ओके, and these petals are usually brightly colored. Okay, and that group of petals, that ring of petals is called corolla, and corolla के भी हमारे दो functions होते हैं, एक तो pollination. Being brightly colored, these corolla, these petals attract insects and thus they help in pollination. Clear? First function. And second is they also provide protection to inner parts of flower in bud stage. When a flower is in a bud stage, they are these members of corolla, means petals, they also provide protection like sepals to inner parts of flower. Okay, so these are the two functions performed by petals. Clear? And because pedicel, thalamus, calyx and corolla, these parts of flower do not participate in sexual reproduction, do not take part in reproduction, and hence these parts are called accessory parts of flower. क्या बोलते हैं जिनको हम लोग? accessory parts, या फिर आप कह सकते हो इनको non reproductive parts. These are the non reproductive parts of flower. ठीक है? So let me tell you again, pedicel, thalamus, calyx and corolla,
do not participate in reproduction process, and hence these parts are also called accessory parts or non-reproductive parts of flower. Okay, now let's talk about those parts of flower which are directly involved in process of reproduction. Okay, that is androecium and gynoecium. Okay, so third ring of floral appendages is known as androecium, and androecium represent male part of flower, that is also called stamen. Clear? So हम इसको stamen भी कह सकते हैं, androecium भी कह सकते हैं, and each stamen is formed of two parts. The below parts, the lower, long, thin and slender stalk-like structure is called filament, and that filament terminally bears a broad and lobed structure that is called anther. Okay, and anther and filament together form stamen, which is a male reproductive part of flower. Okay, this is androecium, that is a male reproductive part of flower, also known as stamen, and stamen is formed of two parts. Lower long slender part is filament that terminally bear anther, which is a broad structure. Okay, and inside the anther pollen grains are formed, and inside the pollen grains male gametes are produced, male gametes are present, and hence because ये parts male gametes produce करते हैं, इसलिए इसको हम male reproductive part of flower भी कहते हैं. Okay, and the last and fourth and innermost ring of floral appendages is that represents the female part of flower, and that female part of flower is also known as gynoecium, and that gynoecium is mainly differentiated into three parts. The terminal and broader part is called stigma, and the lowermost and broader part is known as ovary, and the part of the carpel, part of the gynoecium between stigma and ovary is known as style. So that female part of flower, which is also called as gynoecium, that is differentiated into three parts. Upper terminal part is stigma, the lowermost part is ovary, and the middle part is style. So these stigma, style and ovary together form one gynoecium or one female reproductive part, that is also known as carpel or pistil. So basically a pistil is consisting of three parts: stigma, style and ovary. What is function of stigma? Stigma receives pollen grain during pollination, and hence it acts as a receptive platform for pollens during pollination. Clear? Second, what is function of style? When pollen grain lands on stigma, and if this is of right type, then stigma allows germination of pollen grain, and pollen grain forms a pollen tube. Clear? And that pollen tube moves downwardly through the style towards ovary, and when that pollen tube moves downwardly, the nourishment is provided to the pollen tube by the cells of style. Clear? So पहला function क्या हुआ style का? It ensures nourishment to the cells of growing pollen tube. Clear? And what is its second function? This style acts as a passage, acts as a travel way for the growth of pollen tube towards the ovary. Clear? So style के दो function है यहाँ पर. क्या? एक तो ये ग्रोइंग पोलन ट्यूब की सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, और दूसरा ये पोलन ट्यूब का पैसेज की तरह भी एक्ट करता है. क्लियर? द लास्ट एंड लोअर मोस्ट ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल इज ओवरी, एंड इनसाइड अ ओवरी देयर इज अ होलो स्पेस दैट इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी or ovarian locule. Okay, and inside the ovarian cavity one or many ovules may be present. One or many ovules are present. Clear? And inside each ovule female gametes are formed, and because ovary के अंदर female gametes formation होती है, इसलिए इस कार्पेल को हम लोग, gynoecium को हम लोग female reproductive part भी कहते हैं. Okay, so this is all about the structural morphological aspect of a flower.
Now let's understand what are the role of gynoecium and androecium in sexual reproduction in flowering plants in details. Clear? Because androecium and gynoecium, these are the two parts of flower which are directly involved in a sexual reproduction, which directly take part in sexual reproduction, and hence these two parts are also called reproductive parts of flower or primary parts of flower. Okay, now let's start with the male part of flower, that is stamen. Okay.